good evening to all of you, respected dignitaries who are all sitting here, Mr. J.K. sir, and all the intellectuals sitting over here. I know we are running short of time. Before I start my before I start my sessions, I want to make a few things very, very clear like that. Am I audible at last? Can you see my charming face? It means that you can see my face, it's not charming. So, before I start my sessions, please be very clear. Am I audible at last? I hope, right? Thank you. In which language you like to listen to me? All India ready? I think sir has not mentioned I can speak 37 languages also. So that's not the Bhasha sa vatas nahi. We have this. Okay. Because usually what happens for language is meaning of communication. Through communication we can create an impression. But in an attempt to create impression, people suffer from depression. So we should make it very clear that which language is to be there. And all our faculty is here. Yeah. You want me to teach with this vibrant PPTs because the technical presentation, or you want me to be live? Both. Anyway, I am live. I am not dead. Because sometimes it happens that it's very good to be impressed by point number 1, point number 2. People keep on taking the notes. The notes are full and the mind remains empty. So make it that point very well. I'm very enterprising, very enthusiastic. Respected Mr. J.K. Deshmukh sir, he is a very enterprising personality. Last time when I came, he made it a point. I was having a set of assignments and appointment, but he would gap the appointment and ask me to be there. That you have to give it. And once you make a commitment, तो हमको अपने आप को सुनना ही पड़ता है. अपने आप को नहीं सुन के नहीं practice होता है. So shall we make entirely into English, because sometimes my English becomes, people say, it becomes like a Greek, and people make this. Which language is communication? Let's make it fast. You can take any liberty. Liberty. Okay. English can take liberty, bata both. Thank you. Let's make it to understand, because that's the main purpose, isn't it? Because usually when I came earlier days back from States and speaking, so I learned English was all nasal pronunciation, and people used to sit in the sessions and they say, "Acha to bola par kya bola samajh nahi aaya." And people used to give me compliment after session also. So next time onwards English mein bola kare, ye kya? So it happens. I have to few requests I have to make. In my session, please don't sit with single pillow. Some people sit with single pillow. 4 o'clock, 4:30 ho chuki. I think your college is over. The faculty is sitting after sessions. So they are done their college. Okay, they are done with that. Okay, so they were nicely. They are looking at the watch also. And at the moment, some were saying that he is going to speak for 2 hours. So people were keeping their fingers crossed. May God, 2 hours. So anyway, before you put me on the cross, I will keep my mouth shut. My first and the foremost request, please don't sit with single pillow. Some people sit with double pillow, and some are so expert during their entire regiment life, they can sleep without pillow. and they are equally so very well versed in dramatics, they can make expression and say, So my humble request, don't do that. Sir has not mentioned on this. One of my degree is in dramatics and movie making also. That is from Trinity College, Cambridge. So I can make the good actors. And fortunately, I was also a student, so I know how to make it like that. So it's the most difficult session. Why? Because it's for the faculty. You can keep it changing. Do I have to change or like that? Do I have something like that? Because I feel sometimes PPT distracts more rather than, yes or no? Can you put it? Yeah. I think mostly it's teachers that are there. And with all my authority I can say, it's a very difficult thing to teach teachers. Because just like doctors are bad patients, teachers are very bad students. Doctors are very bad patients. So at the moment doctor को आप prescribe करेंगे, I know. You ask a doctor for a morning walk, exertion काम हो.
So, and the same way if you ask a teacher goes for a training program if it affects his API score. I think you might be having academic performance index and everything. Then his API, he attends the conferences, seminars in India. So in India, our conferences also, when you go to international conferences, it's an era of a plagiarism. I hope you all must have been plagiarism, the culture of cut, copy, paste. Thank you very much. Please don't look, I really want to make me feel like that. Okay. Yeah, I'm looking charming for you. And my foremost request, don't sit with serious faces in my session, please. Seriousness is not only crime, it is seeing. Seeing. Smile. If you smile, I will leave you early, I promise. Gentlemen promise. See, all are smiling. Some are coming with more laughter also. Because, and don't try to impress me by making serious faces, by making I know what is this. Okay, let's understand. Smiling makes the things easy, the first and the foremost part. And that will work on very well in that way. Yeah. As I told you, just to go back, I told you, just doctors are in the bad way, very bad patients, and teachers are very bad students. Why? Especially we get prejudiced with our own thoughts and concepts that we know everything and what more we want to know. And at the moment we start feeling that we know everything, we know nothing. Are getting it? Who's an intelligent man? A person who knows that he don't know and he wants to know is an intelligent man. And who is a dumb? A person who feels that he knows and he don't know and he don't want to know. So there's a number in that order. The first most important thing is that you need to be aware and awake. Buddha was asked like that, are you sent? He said, no, क्या आप संत हैं? उसने कहा नहीं. Are you God? Are you Almighty? He said, no, I'm not Almighty. क्या आप संत हैं? क्या आप भगवान हैं? क्या आप अवतार हैं? उसने कहा नहीं. फिर आप कौन हैं? He said, I'm awake. मैं जागा हूँ, मैं जागृत हूँ. तो हमें अवेक होना बहुत जरूरी है, जागृत होना बहुत जरूरी है. पीछे भी जो नैप ले रहे हैं, जाग जाए, अवेक. Are you getting it? Vikramsingh also say awake and arise. ये जागना कब होता है? When we introspect first. The biggest problem in learning, you know what is that? The biggest problem in learning is ourselves. Our ego, our prejudices, and our thing that we want to put full stop to the thing. I said, okay, I hope you are following. This language is okay? Yes. I said, it's working very well. Please say it loudly. I can be happier with that. That's better. That's better. And teacher should be very. I don't know. I said, don't be serious. Be mature. But don't be serious. Are you getting it? Serious doesn't mean like that. Okay, you can take a nap. Mature is a positive word. Seriousness is a negative word. But we have put and injected so many things up in that regard. So first, we can't be a good student. We can't put the things in ourselves. The biggest problem is that adaptation thing is not there. That innocence is gone. And when that innocence goes out and we feel that by making all these frown faces and intellectual faces, we can portray ourselves to be intellectual, we are supposed to be quite dummy. Just imagine how antithetical our life is, just making things like that. So how antithetical life is like that? People don't smile throughout the day. They are very serious. They don't smile in class also, why you're laughing, why you're serious, all the time serious. And in the evening or morning they go to laugh club and ha 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 ho ho ho. दिन भर उनको लगता है हंसेंगे तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी. Yes or no? People have very antithetical lifestyles. They don't follow up in that regard. They are just following up in that way that the routine is getting clubbed with this thing or the other thing. People go for a sauna bath and everything that way. उनके घर में एसी है, बाहर निकलो कार में एसी है. When they move inside the office cabin also, the cabin is also AC. और दिन भर पसीना नहीं आता तो शाम में sauna bath लेते हैं, steam bath लेते हैं. In a country like India, in any city, you just switch off the AC for your car for a while and you can have all sauna, heat, whatever bath you want to take like that, free of charge. But we have an antithetical things up in that regard. I don't know why it is. My friends, my first request to teachers is like that, never forget that you were a student and you
are student. Never you were, but you are. A good thing about teacher is that he can learn twice. A good thing about teacher is that he can learn twice. And teacher is a pillar, is a foundation for each and everything. And teaching is not a big job. I always believe that doctors and the teachers, these are the two professions. Why we say it's a noble profession, doctors, and putting teachers in that record? Why? I feel that this comes in the clear service sector. I hope respected banker is also sitting here. That also comes in the sector. अभी तो बैंकर की वैल्यू हमें पता चली है कुछ दिनों पहले, है ना? मित्रों, पता चली आपको वैल्यू. Immediately GP high होने के बाद all bankers suddenly became. So people were not ready to give daughters to doctors also. If you are a banker, okay, that's that. But this thing, I feel doctors और teachers को salary नहीं, मानधन, पगार नहीं, मानधन मिलता है, honorary. बाकी सभी को salary. Leave aside, I will not enter into debate of 6th pay commission, 7th pay commission, putting in that, because they have a very big responsibility to turn and transcend the life. And that responsibility sharing has to be understood by that accord. You're getting that point? That is very responsible. If just for 5 minutes, if you're traveling away from your home, or if you're just walking like that, and you want to give your child to someone, a responsible person, you will search who will be responsible to take care of my child for 5 minutes or 10 minutes. And the ward and the parents give their child to us for 8 hours, 9 hours, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, like that. And how do we expect them to teach? How do we expect them to treat? Leave teaching, first treating. I hope you're getting what I'm trying to say in that regard. जब कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, वो राजा बन गए, आने के बाद वो तो 11 साल 11 महीने वहां पे थे, तो उनकी आदत ही वैसी थी, ग्वालों जैसी थी. तो ये देवकी और वसुदेव ने देखा कि ये तो है, बट इनकी जो आदतें हैं वो माखन चुराना, दूध पी लेना, ये राजाओं जैसा फिनेस, that panache was not there. तो उनको उस वक्त के फिनिशिंग स्कूल में भेजा गया, जो सादीपनी ऋषि का आश्रम था, वो जैन में जो हम कहते हैं, उस वक्त का फिनिशिंग स्कूल में लाइक ट्रीटिंग अप दैट लेवल. आई कम दैट कम्स अप दैट लेवल. और जब सादीपनी ऋषि के आश्रम में भेजा गया, तो वहीं जब पूरे उनकी जब शिक्षा हुई और होने के बाद सभी विद्यार्थी जो है गुरु दक्षिणा लेके जाने लगे. जिस दिन था जाने का दिन, तो वहां पे कृष्ण और बलराम दिख ही नहीं रहे, और वहां दिख ही नहीं रहे तो ये सब परेशान हो गए. सादीपनी ऋषि का गुरु माता और गुरु पिता का प्रेम इतना कृष्ण पे, पर वो बिना बोले चला गया, कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं, गुरु दक्षिणा नहीं गया, कैसे चला गया? पर ठीक है, सुबह से सांझ हो गई, नहीं आए, और रात में अनायास उनको किसी के 2 लोगों के पग पे चलने की आवाज आई. और जब आश्रम उन्होंने बाहर आके देखा, तो देखा कि कृष्ण वहां से आए हुए हैं, और हाथ में उनके एक बालक है, और उन्होंने बालक से सौंपा. वो बालक किसका था? वो सादीपनी ऋषि का बालक. जब उस जमाने के जो दैत्य थे, जो दानव थे, कि अगर किसी भी समाज की व्यवस्था को बिगाड़ना है, तो किसको बिगाड़ो? तो शिक्षण प्रणाली और शिक्षण व्यवस्था को बिगाड़ो. और शिक्षण प्रणाली और व्यवस्था को कैसे बिगाड़ेंगे? शिक्षक को बिगाड़ो. अब शिक्षक का मन विचलित कैसे होगा? चीजों से नहीं हो सकता. सबसे बड़ा वियोग क्या होता है? पुत्र वियोग, या कोई भी वियोग, अलग अलग वियोग होते हैं ना, मोह माया. तो उन्होंने उनके पुत्र को ही अगवा कर लिया था, उठा लिया था. लेकिन उस जमाने के वो गुरुजन थे कि अपना दुख किसी को ना जताते हुए नहीं बता रहे थे, और जो मेरे विद्यार्थी है वही मेरे पुत्र है, जो गुरु माता, गुरु पिता, जो गुरुकुल परंपरा के हिसाब से वो चल रहे थे. और पूरे शिक्षण काल में उन्होंने अपने किसी विद्यार्थी को बताया नहीं या जताया नहीं कि मेरा पुत्र मेरे पास नहीं है या कोई ले गया है. लेकिन वो तो बाकी बिहारी का नहीं थे, वो सब जानते थे. तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने गुरु को गुरु दक्षिणा क्या दूं. तो आते आते उन्होंने दैत्यों से सखा करके उनका पुत्र ही लेकर आए और उनको दिया. इतनी त्याग, इतनी निष्ठा, इतनी एकाग्रता. तो शिक्षण प्रणाली या शिक्षक के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी. और टीचिंग इज नॉट लाइक एनी अदर जॉब.
It is not like any other job कि आप 10 से 5, 10 से 6 करके चले जाते हैं। Every day, whatever you do, you will feel like you feel transcended. You make the image to the students, to the kids. आप उनके माइंड में impression create करते हैं और एज में जो आप बोलते हैं वो ब्रह्म वाक्य हो जाता है। Let us go forward with that regard. That's why education is not merely filling of a pail but lighting of a fire. केवल बकेट पानी भरना नहीं है, एक स्पार्क चलाना, एक इग्नाइटेड माइंड बनाना है करके अगर ये बात हमें समझ में आती है तो ऑटोमेटिकली वी कैन टर्न एंड ट्रांसलेट अ जनरेशन इन दैट। And a simple thing, how to be a good teacher. People say like that, I have a PhD, I'm M.Tech, and my ranking is this, I'm a gold medalist and I'm good. People say I have done BEd, I have done M.Ed, and BEd, B.Ed, M.Ed, D.Ed. उससे आप good teacher नहीं बन सकते। That feeling that I want to give what I have, मुझे सौंपना है, मुझे इसे बनाना है। I have to nurture this child. I have to turn and transcend this child. कितनी बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स हम पे सौंपते हैं। It's a triangle for development. Parents, teachers, and student himself. That three comes together. Then only that development comes. If this three doesn't work in harmony, you can turn and transcend. It will not happen in one day. All three things need to work in harmony. Then only it can work. So the first and the foremost things I feel that we need to do is like that. First, understand that I am trying to teach myself, और फिर भी आपको sympathy, empathy नहीं आती, the way I want to teach my kids. जिस तरह मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों को पढ़ाया जाए, आप उस तरह से पढ़ाइए। आपको अच्छा लगता है अगर आपके बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो? Nowadays, it's an era of all confusions. Teachers are behaving like philosophers, just as I said downstairs. They are confusing others and concluding themselves. They are behaving like a philosopher. They are confusing others and they are concluding themselves. And who is a philosopher? A blind man sitting in a dark room searching for a black cat which is not there. एक अंधा आदमी जो काली बिल्ली को ढूंढ रहा है अंधेरे कमरे में जो वहां पे है ही नहीं। Just so I understand. Whatever that. तो आप जब वो कंफ्यूज करेंगे तो स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली बिकम अ बिग थिंग समथिंग दैट यू नो दे विल हैव अ ग्रेट जम्बल ऑफ थॉट्स एंड इट विल नॉट वर्क एंड द टाइम इज चेंजिंग द टाइम इज रियली चेंजिंग आई होप यू आर एग्री विद दैट द अर्लियर डेज द टीचर्स यूज्ड टू हैव लाइक दैट वो सॉन्ग वाज दैट छड़ी लागे छम छम विद्या ये खम खम ऐसा कुछ था ना छड़ी लागे छम छम आप बच्चों के सामने गा के बताइएगा दे विल पोस्ट वो पुलिस कंप्लेंट बॉक्स स्कूलों में छड़ी की बात करता है। Yes or no? You can't put up in that way. The generation which is coming, these are the generation of Huggies and Maggies. Yes or no? Yes. Don't feel about it. They know about it. Generation of which they talk about the Maggie foods, the Huggies and pizzas and everything in that regard. Now everyone is having a kid up to in that regard. Every biggest problem with the teachers or the genre is that our generation, they don't want to understand. People say आमचा काढच वेगळा होता. आमच्या काळी असं नव्हतं ते. सगळ्यांचा काळ तसाच होता. लोक म्हणतात आमच्या काळी आम्ही सायकलने जायचो कॉलेजमध्ये. यांच्याकडे बाईक आहे. बाईक कोणी घेऊन दिली? अरे त्यावेळेस सायकल पण कमी लोकांना भेटायची. सगळ्यांना सायकल भेटायची का? अरे पार्टी करते ना बाबा? आता लोकांना अरे बाबा पार्टी नको. वो इतने देर में इंग्लिश में चल रहा था, बोले जल्दी हो जाए तो वो पीछे कुछ लोगों ने धुआं पड़ना शुरू कर दिया, कलमा पढ़ना शुरू कर दिया कि जल्दी से हो जाए इंग्लिश में, तो हम एक बार हंस के ताली बजा के जा रहे हैं। और ऐसे स्थिति में जो श्रोता वो होता है जो कभी नहीं सोता, और बड़े चातुर्य है श्रोताओं में। कुछ श्रोता तो ऐसे होते हैं कि भाव होकर जोर की ताली लगती है, उनको लगता है कि ताली बजा है, ये भाव होकर चुप हो जाएंगे, है ना? तो वक्ता भी दो तरीके होते हैं, एक ताली से और प्रेरणा लेते हैं, आपने ताली बजाया तो और प्रेरणा लेते हैं, ठीक है? अच्छा, कुछ लोग बड़े चुपके से उनको लग रहा है कि सुनना तो है, अब सुनना है सहना उनके हाथ में, तो चुपके से देख रहे हैं, घड़ियों को भी देख रहे हैं। आप कितना भी घड़ी को देखें, दीवारों को देखें, कुछ भी देखें, जब तक हम नहीं खत्म करेंगे नहीं जाएंगे। तो उससे अच्छा मुझे देखिए, I'm more interesting, I suppose, life. You can't avoid it, enjoy it. देखिए, मुझे आज भी नहीं पूरा विश्वास है, by the end of the session, you will feel it was a worthwhile. ठीक है? आधा घंटे में थोड़े से देरी से पहुंचेंगे, लेकिन पूरे खुश तरोताजा होके पहुंचेंगे।
very happy. That's my promise to you. Don't worry. आप मुझे अपना समय दो, मैं आपको बहुमूल्य चीज दूंगा, आपका समय बदल दूंगा। थोड़ा सा So point is that लोग कंपेयर करते हैं। Our generation was different. Nothing like that. तो जनरेशन के हिसाब से चेंजेस हुए ना। I say in my lectures in the early days also like that. पहले our things only TVs, radios, gramophone, कुछ ही घरों में होते थे। एक ही जीप कार आ रही है, थोड़ा ठाकुर साहब की गाड़ी है, बड़ी गाड़ी आ रही है, एक ही गाड़ी से पता चलता किसकी आ रही है। आज ऐसा नहीं है। After 92, 93 LPG, liberalization, privatization, globalization, सभी के पास मैक्सिमम। पहले बच्चों का जन्म होता था तब गाड़ी बुक करते थे और वो गाड़ी 5-6 साल बाद आती थी, उसको कोई कलर चॉइस नहीं होता था, नथिंग, जो आएगी 5-6 साल बाद आती थी। अरे ठीक है, एक गाय, एक घोड़ा और एक गाड़ी, ऐसा बच्चों के साथ रखते थे। And the vehicle there was no choice. Any used to come, laminate house with colors. I hope people might have listened like that. Machines and वो kick करके चालू करना, वो ब्रासों के स्टार्ट से करना करके। When the TV also came, I know my friends at last, ये तो हमारी यंग जनरेशन के, हमारी पीढ़ी के लोग बचे ही नहीं अभी। देखो अपने आप के हजारों लोग हंसते हैं, क्या जमाना आ गया। वो पीछे सोचा है आज के जमाने में जिन्नात को भी मौत हो चुकी होगी। तो पहले जब टीवी भी आया था तो टीवी भी becomes like that. I hope you remember the days of रामायण and महाभारत। तो रहते लोग 9 बजे नहा धो के बैठते थे, देखिए प्रोग्राम चलता था। वो महाद्वार जैसे टीवी होते थे, टर्नर्स होने वाले, है ना? वेस्टर्न, डायनोरा, सलोरा, मेरे ख्याल से यंग जनरेशन को तो याद भी नहीं होगा वो टीवीज के नाम। वेस्टर्न या डायनोरा, क्राउन, है ना? मर्फी, द बॉय। I hope all these young people might not be knowing. हमारे जमाने की बात कुछ और थी। नहीं, लेट मी टेल यू, सोमाली की बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। लोग मुझे कहते हैं जब भी प्रोग्राम में जाता हूँ, जस्ट थोड़ा ऑफ द ट्रैक, कि सर आपने इस उम्र में भी बहुत अच्छा मेंटेन किया है। लोगों को लगता है कि मैं एक ऐसा बूढ़ा आदमी हूँ जो जवान दिख रहा है। जबकि ट्रेजेडी ये है कि मैं एक ऐसा जवान आदमी हूँ जो कि और जवान दिख रहा है। So वो जमाना जो था टीवी का, उसमें टीवी भी किसी क्या होता है 9 बजे and that महाद्वार टीवी ओपन होता है, जो महाद्वार सेंटर से खुला है और एक ही चैनल था, दूरदर्शन। ऐसा दूरदर्शन आता, सब ऐसे देखते थे, बड़े श्रद्धा से, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। रामायण आए तो लोग हाथ जोड़ते थे, आपने ठीक है, हाथ जोड़ते थे, देश पे जो आया कृषि दर्शन से लेके आमची मठ सब प्रोग्राम रिलीजियसली थे, कोई चॉइस नहीं। ये नहीं संडे को बंधुओं के समाचार में देखते थे, उसके बाद रीजनल मूवीज, उसके बाद जमाना आया यू नो दैट उसी में चैनल चेंज होने लगे, डीडी के चैनल्स आने लगे। आई डोंट दिस इज ओके और यू वांट मी टू बी फॉर्मल, आई कैन टीच दैट आल्सो। इट इज वेरी इजी फॉर मी टू डिप्रेस एनीवन। I get it like that. Point number 1 is going like that. I can teach like that also. Technical presentation that we give. You want like that or you want me to like? You want me to perform or like? Live थोड़ा अरे पता सब live बोला था live ठीक it's okay I understand. उनको लगता है कि लाइव में सर को ज़्यादा जोश आ गया, ज़्यादा बोलने लगे तो हमको रुकना पड़ेगा। ठाकू लगा ये तुमसे समोर है, पार्टीशन नहीं है, जाओ दे तुम्हारा ठीक है। तो वो एक ही चैनल पे दिस टू एक शॉट, अरे देखिए कोई नहीं, फिर हमारे पास डीडी के चैनल्स हैं तो हम इसमें टक 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 कर रहे हैं हैप्पी। आज देखिए हमारे पास बाद में कलर टीवी का चल रहा है, द जनरेशन ऑफ कलर टीवी, देन केवल चैनल। आज भी चैनल्स का है ना जमाना कि हम चैनल से चेंज कर रहे हैं, टक से करो चैनल चेंज। खुदा ना खास्ता कभी अगर चैनल की बैटरी भी, रिमोट की बैटरी भी कम हो जाए तो हमारे हालत ऐसी होती है, ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं कि हमारे प्लेटलेट्स कम हो गए, एचपी कम हो गया, ऐसे ऐसे जाते हैं, बहुत गुस्सा आता है। ऐसा भी नहीं है कि लोगों के हॉल 30/40 के हैं कि स्कूटी को किक मार के जाना पड़ेगा जाने बदलने के लिए, सोफे पे बैठे हुए हैं। हमारे जितने पुरुष मित्र हैं उनका भी फायदा रहता है, वो बैठे बैठे जाते रहते हैं अपने बहनों को, बीवियों को, दीदी को, है ना, छोटे बच्चों को बोलते ही बोलते हैं, मतलब पुरुषों का तो भी फायदा है, उसमें वाइफ लोग बोलती है कमी है
हर एक का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में टीवी को बंद कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छे बोले। तो वो चैनल का चीज। तो now the technology is an era of development. It's an era of enhancement. So अभी technology has come to level that TV, we have a curved TV, paper TV, now it's coming up, glass TV. Then Japan has made with the sensors, eye sensors, कि चैनल का एक भी क्यों दबाना, पहला झपका होता चैनल चेंज। ये भी eye rays के ऊपर सेंसर्स है, पहला झपका चैनल चेंज। वो नेक्स्ट भी आ रहा है। We are trying to make TV. I think I looked at joke in that in our neurology research institute like that. पलक भी क्यों झपकाना चैनल चेंज? सोचो तो चैनल चेंज। बस सोचो क्या देखना है तो चैनल चेंज। लेकिन उसमें प्रॉब्लम सब मिलके संस्कार देखते हैं। हमें कंफ्यूज हुआ किसने सोचा? दादाजी। क्योंकि इंसान की सोच और सोच पे नियंत्रण नहीं है। दो चीजों तो है नहीं। और मोदी जी तो कहते हैं जहाँ सोच वहाँ शौचालय है। Don't record it, बात करना। आपके यहाँ 3 घंटे रहेंगे, मुझे दिल्ली रहना पड़ता है 3 दिन में। ठीक है। So point is that thing has come up, advancement. पहले डॉक्टर्स भी, डॉक्टर means only one doctor. I think all of senior friends एक ही डॉक्टर, MBBS physician and surgeon, वह सबको चेक करेगा। कोई भी आया तो प्रोसेस सेप्ट्रॉन देके फ्री, जानवर इंसान सबको देके फ्री करके। वो सब हमारे यहाँ कुत्ती बिल्ली को भी दे सकते हैं। एक ही डॉक्टर। Position was same, family doctor, physician and surgeon. Then came the era of specialist, cardiologist, neurologist, ophthalmologist, etc. अभी era of super specialization. आपने पहले MD तक सुना था, DM तक क्या है? MD के आगे भी DM है। पहले आपने MS तक सुना था, MS, MCH है। Now super specialist, you go to ophthalmologist, doctor मेरे तो आँख में प्रॉब्लम है कौन सी? राइट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड डॉक्टर। ऐसा है, डोंट फियर। अभी आपके यहाँ पे शायद आने का पर आज होगा स्टेट। आगे नैनो स्पेशलाइजेशन आ गया है, नैनो। हमारे न्यूरोलॉजी में तो नैनो स्पेशलाइजेशन है। आपने डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है, एग्जैक्टली कहाँ दर्द है? डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है, एग्जैक्टली या राइट में। ओह सॉरी, बट टेक्निक इज साउथ टेक्निक नॉट फॉर इंच एरिया बटे। cerebral, pons, everything has been turned up and translated up in that regard. Inch से area बढ़ चुकी है. And the problem is that you study brain in 2 parts, right hemisphere, left hemisphere. In right brain nothing is left, in left brain nothing is right. The biggest problem both the time, which is a surviving and a striving ages like that. So we have to start up in that way. So point, every time it's an era of development, but development हम किसको कहते हैं? केवल नई टेक्नोलॉजी आना ही डेवलपमेंट नहीं है। कोई नई टेक्नोलॉजी आने की पीपल फील एक जंगल को हमने खराब कर दिया और वहां के अंदर एक बिल्डिंग बना दी एंड वी से ये एरिया डेवलप हो गया। और फिर वहां बोलते हैं कि घरामध्ये साप निकाला। वहां पे फ्लैट बनाते बोलते हैं घरामध्ये साप निकाला। अब आप सांप के घर में जाके रहिए और बोलेंगे हमारे घर में सांप निकला। दिस इज समथिंग very antithetical things like that. Yes or no? We have to understand the concept. पहले तो टीवी को idiot box बोलते थे. I think this generation might agree like that. But now you have so many things back in there. Now you have moron mobile. I will term it as an imbecile internet. In all students' hand, in all your hand is a smartphone. आजकल phone smart हो चुके हैं, हाथ भी डल हो चुके हैं. Yes or no? So people are quite busy. And asking every now and then WhatsApp, 1000 लोग कुछ भी पूछते हैं, WhatsApp पूछ लेते हैं, लेकिन फेस टू फेस WhatsApp बात नहीं कर सकते। Facebook पे 1000 लाइक्स हैं, पर फेस टू फेस बात नहीं करते। Yes or no? Face to face they can't talk and then put up in that regard as thing. पहले सुबह उठ के वो कराते लक्ष्मी कर दर्शन करते थे, आज तो सुबह उठ के पहले Facebook देखते हैं, या फिर देखते हैं WhatsApp पे कितने मैसेजेस आए हैं। This generation is really becoming dangerous up in that regard. तो एडवांसमेंट को आप पहले समझिए कि हम एडवांसमेंट किसको बोल रहे हैं। केवल नई नई चीजें इंट्रोड्यूस होना, नई नई तकनीक या टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होना, वो एडवांसमेंट नहीं है, दैट इज एन एडिशन। These are the addition of the things that is happening in our life. The mantra for survival is updating and upgrading our brain, our know-how, our knowledge. And how to update and upgrade is that by understanding the brain, the pulse of the student, the pulse of society, the pulse of ourselves, अपना pulse. And people fail to do that.
So my first and foremost, just try to empathize with the student first. अपने आप को स्टूडेंट की जगह पे रख के देखिए कि वो चीजों को कैसे समझना चाहेगा. I'm not saying sympathize, empathize. अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखिए, and automatically understand and translate that things become much more easier. Definitely don't give the examples कि okay हमारे टाइम में ये नहीं था, it was not there in the past like that. Things keeps on changing, keeps on moving. Now you are coming maybe by bike or by the car. By the next thing, the generation they might come by the metro. Things over here. After the metros, there might be super jets. There might be supersonic jets. हो सकता है आज management members might be giving the luxury cars. हो सकता है वो आने वाले दिनों में jets ही आए, है ना? और यहाँ पे helipads बने रहेंगे. So anything can happen in coming days. Things can change in that regard. But that addition of the things is not there. Please understand. So the first and foremost thing, the first mantra for reciting is update and upgrade. अपने आप को update कीजिए और upgrade कीजिए. Upgrade केवल physical makeup नहीं, mental makeup. Always learn something new. Always be smiling and try to make your education edutainment. Education plus entertainment. That's formula is an edutainment. थोड़ा edutainment होना चाहिए. क्लास में आने के बाद कहीं भी आने के बाद स्टूडेंट को लगना चाहिए कि I want to go to college. I will get something new, something novel. Getting it? It's not feel like I want to complete this degree and go out of here like that. जिस तरह का भी impression या depression हम students में बनाते हैं, जो impression बनाते हैं because of things people around us. Just tell me where Tagore started Shanti Niketan. It is started in the metros. It is started in the metros like that. औरबिंदो ने कहाँ शुरू किया? पिलानी कहाँ पर? किसी भी चीज के लिए people who are not worried about geography they can only create history. जो लोग भूगोल की चिंता नहीं करते वही लोग इतिहास बनाते हैं. बच्चों के मन से फैक्टर्स निकाल दीजिए करके कि वो छोटी जगह पे हैं, स्मॉल प्लेसेस पे है, they need to move like that. हम लोकल ब्रेन ट्रेन के लिए बच्चों को तैयार करते हैं. यहाँ का बच्चा सोचता है वहां से एडमिशन जर पुण्यामध्ये झालं असतं बरं झालं. पुणे का बच्चा सोचता है करके कि इसका होने के बाद थोड़ा एमएससी फाइल गो टू यूएस दैट विल बी बेटर. Why we are investing hell lakhs of crores of rupees on the IITs and still the brain drain problem is there like that? Why? What's the reason? We are unable to provide the correct infrastructure and the boosting to our talent potential. The NASSCOM report says 73% of the engineers are not ready to be employed. They are not ready to be employed. By employment के लायक है ही नहीं. They are not ready like that. They have completed their degrees. 70-80 up in that regard. But they are not ready and eligible to be employed. Why? Because they don't have that fitness, they don't have basic skills, the soft skills, the working, the potential. Suddenly get depressed up in that regard. Who is responsible? आज 12th standard graduation के बच्चे यहाँ तक कि डिप्रेस अभी भी डिपेंडेंट है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? Our entire education system, with that faith and love, we have not injected in them. With that faith and love, they have been developed that liking for education. उनको वो education के लिए वो श्रद्धा निर्माण ही हुई. The biggest problem, the concept I say is brain in the belly concept. हमारे यहाँ third world nation theory में, मैं इस theory को कहता हूँ brain in the belly concept. सब काम पेट से है. Brain in the belly. दिमाग हमारे पेट में है. क्यों सीख रहे सर? पोटा पाने से प्रश्न है. काय सीखते हैं सर? पोटा पाने से प्रश्न है. डोक्याचा प्रश्न नाही. सगळं पोटा पाण्याचा प्रश्न आहे. कुछ भी हो पोटा पाण्याचा प्रश्न आहे. Why the students over here are not going for the research? The next world war is definitely going for the patent and पानी. I feel like अगला वर्ल्ड वॉर अगर हुआ तो वो पानी और पेटेंट के लिए होगा और किसी चीज के लिए होगा नहीं. लेकिन उसको लगता है कि एक बार मैं ग्रेजुएशन हो जाऊं तो पीजी करके कुछ नहीं तो फैक्टर्स में फैकल्टी में जाऊंगा इंडस्ट्रीज में. और पीएचडी करना इसलिए जरूरी क्योंकि एआईसीटी नॉर्म हैज मेड इट लाइक दैट. So when should I get promoted from assistant professor to associate, associate to professor, and I should be there in the university norm list up in that regard and wait for the 6th pay and 7th pay and 8th pay, whatever 9th pay, and if you don't pay, then I will say. Guess what? People are more worried about in that record and APS code. I moved to the international conference and see after two things like I can make it out कि ये बच्चे ने कहाँ से लिया है. The plagiarism is the biggest problem. Cut, copy, paste. And we are holding, and AICT is putting
the pumping hell lot of money in the RUSA, Rashtriya Uच्चतर Shiksha Abhiyan, and research methodology and this like that. But why research? The research associate is also coming because 30,000 rupees is getting grant for that. And addition of the laptop fees and facilities that is coming up with that. Why not? The students have stopped being curious. उनमें डाउट बढ़ ही नहीं रहे। देखिए अगर पॉजिटिव स्टूडेंट है तो उसमें जिज्ञासा क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, नेगेटिविटी पेसिमिज्म उसमें डाउट आता है। स्टूडेंट में क्यूरियोसिटी नहीं है। आज बचपन से स्टूडेंट्स दे आर नॉट आस्किंग क्वेश्चन, दे फील समथिंग सर वी विल गूगल इट। What you will Google, my child? Do you understand the difference of Google like that? And Google don't have all the answers. Any information you upload, if tomorrow you upload also, are you getting it? Dr. Vikramsingh is the president of Ghana. It will be there. You can download that. But whether that information is authentic? Am I a president of Ghana? I am not a president of Ghana. But anything that is uploaded can be downloaded. But that download, is it authentic? तो हम उनको वो नहीं सिखाने। Please understand, IT, KT, WT, that is different. Information is not knowledge, knowledge is not wisdom, wisdom is not truth, truth is not beauty, and beauty is not love. अगर किसी लाइब्रेरी में आपको एक पुस्तक दिखती है कि ओथेलो बाय शेक्सपियर, तो आपको केवल ये सूचना है कि शेक्सपियर ने ओथेलो लिखी है, आपको उसका ज्ञान नहीं है, तो केवल इंफॉर्मेशन है। जब आप ओथेलो पढ़ते हैं, when you read Othello by Shakespeare, then you get a knowledge of Shakespeare in that. When you read all the tragedies, comedies, all the plays and poets of Shakespeare or something like that, then you realize, okay, I'm enjoying Shakespeare, I'm enjoying literature. Then you reach to the third stage, wisdom. And that's the stage, that is wisdom. So IT, KT, if you are just having information, then you are a literate. If you are having knowledge, then you are a learned. And if you are having wisdom, then you are laureate. हमें students को यहाँ से transcend करना है। पर हम वो ट्रांसेंड ही नहीं कर पाते, सिर्फ आईटी इंजेक्ट करके छोड़ देते। We have to make them work on their intuitions, not on tuitions. Unfortunately, this entire generation is working on tuition. क्योंकि उनको बचपन से आदत दे दी है, कुछ भी हुआ तो ट्यूशन करो। In our days, जो बच्चा ट्यूशन कर रहा था, हम उससे बात नहीं करते, बताते थे नहीं करता बच्चा है, बुद्धू बच्चा है। जिन बच्चों के बैग में वो गाइड होती है, मिसगाइड करने वाली चीजें होती थी, जिसको नया डायरी होता था, I hope you remember like that, या 21 most likely, तो उनसे बात नहीं करते, no, बुद्धू बच्चे हैं। Aim was only to get a first rank, become monitor of the class. आजकल जो ट्यूशन नहीं जाता लोग उससे बात नहीं करते। अच्छा, पेरेंट्स भी इतने जल्दी में हैं, everything like that, कि बच्चे ने डांस क्लास भी करना चाहिए, उसके बाद उसमें स्विमिंग भी करना चाहिए। बच्चे खाली बैठे उनको अच्छा लगता है, और कुछ नहीं तो सुंदर वर्णदार हस्ताक्षर की क्लास देखेंगे। इतने सारे छंद शिबिर, कुम्हारी शिबिर, व्यक्तिमत्व विकास शिबिर, और उनको पूछा तो आम्हाला ते भेटलं नाही, आमच्या काही मत आहे। अरे तुम्हाला भेटलं नाही पण त्यांना पाहिजे का? अच्छा, पिज्जा खिलाते हुए तुम लोग देखो पिज्जा खिला रहा हूँ, होमवर्क डबल करना पड़ेगा। मेरे तरफ से आप भी खा लो और मेरा ही होता है। पेरेंट्स और टीचर्स की अगर आप बातें देखो तो इतनी हास्यास्पद बातें करते हैं, बहुत ही हास्यास्पद बातें करते हैं, बहुत ही टीचर्स लोगों से ये क्या टीचर्स आल्सो डोंट लाइक दैट व्हेन बच्चे गुड मॉर्निंग विश करते हैं, टीचर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कैसे होना चाहिए? उसमें गुड भी कुछ नहीं, मॉर्निंग कुछ नहीं। आर यू गेटिंग इट? वो टीचर्स स्टार्ट एक्सप्लेन द diagrams on the things like that. Some they use a very funny English. Look at this figure and your figure and my figure. With all the bellies and put up, students will say like that, sir, your figure, my figure is much more better. You have to say that like that. Diagnosis, I find what's the problem with our education system. Let's quickly pass. Lack of self-esteem and actualization, lack of initiative and team spirit, lack of corporate manners and etiquettes. This I am using because why the MNCs are not coming and why the peoples are not coming. The policy of the HR nowadays is hire slow and fire fast. What is the policy of HR policies now? Hire slow and fire fast. Hiring process very slow. Technical interview, quantitative aptitude, HR round, this round, that round, फलाना ढिकला. अब education system पहले जैसी नहीं है, ये सब तो it is system like chain, more filter, and they will select the candidate, and if after 2 months they didn't like the candidate, they will
give you a bouquet, that is known as a golden handshake, you are fired. सीताराम, आराम करो. That's known as a golden handshake. जब आपको टाटा बाय बाय कर दिया जाता है कॉर्पोरेट से, इतना अच्छा नाम है golden handshake, और गोल्ड एक ग्राम भी नहीं मिलता. And they are given a golden handshake, means you are fired. So hire slow and fire fast. इस जनरेशन में इतनी परफॉर्मेंस एंजाइटी रहती है कि स्टूडेंट्स हैव टू बी लाइक दैट. That's why they have to have a corporate education manners. Complex, inferiority or superiority. That goes with students and teachers as well. Ego, superego, anxiety, fear, phobia, performance pressure, push, pull and test, communication culture, negligence, bias, prejudice, regional pampering, lack of global vision. That is the thing of that regard. Of course, we in a country like India have a hell lot of problems. Our education system and our education system is more like a task. It's not a pleasurable thing. साला एक तास. हमारी सिस्टम कैसी एक तास? बच्चे को फोर्थ तक तो समझ में आते नहीं वो क्या कर रहा है करके इधर से उधर से करके. Our parents भी because of their status they are writing, they don't understand. Many parents even don't understand the difference between state board, CBSE, ICSE, IB. But डॉक्टर का बेटा वहाँ जाता है, वहाँ पे सब अमीर होके जाते हैं, तो मेरा बच्चा वहाँ जाना चाहिए. उसका फुल फॉर्म क्या है पता नहीं, पर हमको पता है. सब तो फीस से भी जज कर सकते हैं. In fact, nowadays parents started judging the classrooms by color of the wall, by the tiles downstairs, and smart boards. All lectures like that. It's a very amazing thing. Now the teachers and things are gone like that. This secondary things has come like that. तो पहले बेचारे को 4th तक के तो समझ में आता नहीं, 7th तक के सेकेंडरी वो चड्डी बट्टीज होते हैं, you don't understand. 8, 9 में जब एज ऑफ पिंपल्स आती हैं, तब भी सारे ड्रास्टिक चेंज 10th और 9th 10th आते हैं. तो बच्चों को हम लोग क्या सिखाते हैं? 10th is the only important year of life, turning point of life. बेटा फक्त 21 वर्ष है, कसूम अभ्यास करना, कसूम. बेचारे बच्चे यहाँ ट्यूशन जा रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, लोग वैसे से बड़े प्यारे प्यारे थे, जस्ट 15-16 के वो बच्चे बेचारे दौड़ उनकी हालत देख के अपने को ऐसा लगता है थोड़ा रोक के उनको ग्लूकोन डी मिला देना. They really do. If you look, people say sir work maintenance. And this एक बार 10th हो गया, that's a turning point of life. Life is set. जैसे ही 10th होता है, बेचारे they come out with flying colors and everything so that उनका रिजल्ट हाथ में आया नहीं. No. 12th is the only important year of life. Turning point of life. कसम अभ्यास कर. फक्त एक वर्ष है. इतना एक साल पढ़ लो, उसके बाद लाइफ सेट है, आगे पढ़ना ही नहीं. अच्छा भी सोचता है बाबू ये हो गया तो इस बार हो जाएगा. वो बेचारा दौड़ रहा है, वो 11th क्वेश्चन यहाँ दौड़ वहाँ दौड़, ट्यूशन. आजकल तो फिल्टर भी बहुत आ गए. उसके बाद सुपर एग्जाम्स, नीट, कीट, सैट, कोटा, मार्बल सब करना पड़ता है. सो मेनी थिंग्स आर देयर लाइक दैट. वहाँ जाओ, यहाँ जाओ. अब ये सब करने के बाद एग्जाम, देन फिर एंट्रेंस एग्जाम, वो सब होने के बाद अच्छा 10th 12th में माँ बाप है कि बच्चा है पता ही चलता. माँ बाप को भी कार्ड दो तो यार 22 वर्ष है, शादी में आपको ऐसा 22 वर्ष है, ज्यादा तुम्हारा ऐसे लगना. तो उनको लगता है कि वो थोड़ा सा वही पेपर लेके आएगा है ना. अगर वो 2 घंटे घर के बाहर जाएंगे तो बच्चा टीवी चालू करेगा, उनको डर लगता है. हो सकता है. अच्छा ये 12th उसका होने के बाद बच्चे को लगता है कि हो गया, नहीं ही गॉट परसेंटेज, नाउ ही इज इनटू द इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल, कहीं भी है. वो होने के बाद फर्स्ट ईयर ओनली द एचओडी, डीन, प्रिंसिपल, डायरेक्टर कम्स टू हेवन. फर्स्ट ईयर इज द ओनली इम्पोर्टेंट ईयर ऑफ डिग्री. कसम अभ्यास कर, कसम. अरे किती कसायचं कुठला जो कुठे रवायचं लोकांना कळतच नाही. हम एग्जाम में बैठे कि बाथरूम में बैठे कसा शिक्षण कसून विद्यार्थी मेरे बसून. हम बच्चों को डरा के पढ़ा रहे, ये नहीं होगा, your life will not be settled, you will be out. Don't compare that child. तो भांति तुझे सोबत होता, वो देखो तुम्हारे साथ था. इमेजिन कीजिए अगर बच्चे आपका कंपैरिजन करे तो माँ बाप का कंपेयर करे तो आप देखो. यस सर. हम जब बच्चा पैदा होता है when the things like that, पहले 3 दिन उसको कुछ समझ में आते हैं. When after 7 months is developing the fetus, he is listening. That's things, everything goes like that. For 3 days he doesn't understand. He just trying to repeat. What's the language procedure?
Then he understand after 3 years like that he started recognizing, okay, this voice is coming up, और ले चुनु चुनु मुन्ना मुन्ना ये सब हम भी बोलते हैं करके। तो ये जब मुझे कुछ होता है नैपी में गीला होता है तो ये लेडी आती है, ओ तो पापा आते हैं, बोली चुना दादू ये आते हैं। तो फर्स्ट he is listening, वो पहले सुनता है। Second stage, from 3 days to 3 months he is listening only. Simultaneously he is interpreting. From 6 days he starts like that till 6 months he is interpreting. From 6 months he starts to repeating. And after 1 year he repeating को starts speaking. आई तेरी चक्कर आई मतलब ऐसा होता है कि नहीं, लोग बोलते हैं कि बच्चा पहला वर्ड आई बोलता है। अमेरिका में बच्चा पैदा हुआ आई बोलेगा ना, बच्चा आई बोलता है ना, माँ बोलता है ना, अम्मी बोलता है ना, मम्मी बोलता है। बच्चा साउंड प्रोड्यूस करता है, जो हम उसको दिखाते हैं सिखाते हैं वो बोलता है। इसलिए मदर टंग कैसे आती है हमको, ऐसे आती है, लिसनिंग, इंटरप्रेटिंग, रिपीटिंग एंड स्पीकिंग। इसलिए हमको मदर टंग 4 स्टेज में आ गई। तो 2 साल में 2.5 साल में आप अपनी मदर टंग बोल सकते थे, हिंदी मराठी। और बोलते हो क्यों, कैसा बोलते उसको, और ले चोना चोना वर्ड क्या है, अरे रे रे। पर बच्चों को बोलते वक्त कान में फ्रिकेटिव्स लाइक एफएम चुभना भी चाहिए, ना पोस्टरी नहीं बजे तो भी उसको ब्लंट कर दे। और ले इमेजिन कीजिए बच्चे इतने एडवांस पैदा हो रहे हैं कि पैदा होते बोल रहे हैं, जैसे आजकल की जनरेशन में आ रहा है इधर आप बोल रहे हो ले सीधा बोल रहे इस हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन क्या हाल लगता है ये सब मुझे वो बड़ा फील होता है क्या हो सकता है। आजकल तो बच्चे क्या बोल के पैदा हो वो लगा बोल के बोल सकते हैं maybe yes or what the point I'm trying to say, जब बच्चों के कान को चुभना नहीं चाहिए तो उन शब्दों को भी ब्लंट, हम लोग क्या कहते हैं फर्नीचर क्या कहते हैं कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में स्कूल में, शार्प एजेस नहीं रखना, कर्व इट, ग्लासेस को कर्व इट, द एजेस शुड नॉट बी शार्प, इट शुड नॉट हिट द और हर्ट एनीवन। जब हम इतनी बेजान चीजों का ध्यान रखते हैं तो जानदार बच्चों की फीलिंग्स का क्यों नहीं, ये सब फिर उनको ऐसे टच के कैसे बोल सकते हैं, करते हैं तुला तमें ना होइल का तुझे तो भाती बात। बच्चों की जब आप ईगो को हर्ट करते हैं, एवरी चाइल्ड हैज अ सेल्फ रिस्पेक्ट and every child is a process making, they can definitely go and translate and put up in that regard, so their ego should not be hurt at that way. On the name of competition there is comparison, हम तुलना करते हैं, competition is not comparison। जब आप तुलना करते हैं तो things may move from bad to worse, that should not be here for that। We have a hell lot of problems, I understand, our population is high and heterogeneous, everything is copied and confusing, our practices are complex and chaotic, and our principles are conflicting and contrasting, our principles are very overtrained, and our purpose is merely placement and package। We are just struggling from the placement, package and pooling। ये हमारा placement। आज 6th standard का बच्चा पूछता है कि what is the placement, sir कौन से कॉलेज में placement अच्छा होगा। आज 7th standard guy is suffering from cardiovascular attack। A maximum people who come to the hospitals for a genuine suicide attempt किए, last year 79 cases which are there for the suicide attempt, out of that only 3 were the students who failed in exam। out of 79 only 3 were there who failed in exam, 76 students वो थे जो पास थे, टॉपर थे, मेरिट थे, पर उनका प्रॉब्लम था कि मैं 10th मेरिट आया, मैं फर्स्ट आने वाला था, मैं 5th आया, हम 5th आए, हम 2nd आने वाले थे, फर्स्ट आने वाले थे, मैं महाराष्ट्र में टॉपर होने वाला था, मैं इंडिया में टॉपर होने वाला था, ये रैंक होना था। उन्हें हम इतना डरा कि इतना बैटर, why we are not teaching them, it's okay। First, they don't have aim, they don't have any target। Difference between target and aim is that aim वो होता है जो लक्ष्य होता है, target होता है कि बस हमको पूरा कर देना है। aim होता है लाइफ लॉन्ग पैम्पर करते हैं। स्टूडेंट का ये aim ये होना चाहिए कि I want to become a scientist, I want to become going to multinational company, I want to contribute like that। That should be the aim। I just want to get a job, that can be really target। target और aim में फर्क है। मेरा ध्येय उद्देश्य उसको पाने के लिए that is a different thing, and for that projection is required।
If students are suffering and getting depressed to such level, that's really pathetic. We are turning them, we are forcing them. हम उन्हें इतना force कर दे रहे हैं, इतना bracket में बांध दे रहे हैं कि they are not realizing that really the life is so beautiful. They are not enjoying education. They just want to pass out, have a hefty package, and they are contributing what they don't like that. And if not, in the later part of life, they are becoming depressed. And maximum number from the corporates, from the MNCs, what they are getting the patients like that, because they are not happy and content with their job. They were not knowing exactly what to do. So what kind of generation we are making? So we need to teach them not merely cost, but the value of the things. हमें students को